Hello बच्चों, let's read this question. Assertion A. Stoichiometric compounds obey the law of constant composition. Reason are Schottky and Frenkel defects are observed in stoichiometric compounds. And these are the following options given to us. So let us discuss about the key concept first. इस क्वेश्चन का जो key concept है, that is the stoichiometric compound. Stoichiometric compounds. So let us see stoichiometric compounds कौन से होते हैं. Stoichiometric compounds are those जिनमें number of atoms present in elements जो है that can be expressed into the smallest whole number ratio. Basically let us consider हमारे पास Fe2O3 है and Fe0.93 एक कंपाउंड हमारे पास ये है एंड सेकेंड इज दिस वन एंड हियर वी कैन सी Fe2O3 में जो भी हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है आयरन एंड ऑक्सीजन के, उनमें जो भी नंबर ऑफ एटम्स है दैट हैव द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में है एज वी कैन सी आयरन दैट हैज द 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 3 एटम है. बट इन दिस वी कैन सी जो आयरन है उसका पूरा एक एटम भी नहीं है, दैट इज 0.93. सच कंपाउंड्स जिनमें रेशियो नहीं होती है स्मॉल होल नंबर में दैट आर टर्म्ड एज द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड जिनमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर दैट आर द स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स. So we can write chemical compound in which the number of atoms present in elements can be expressed as a ratio of small whole number, as a ratio of small whole number. And the assertion says कि जो stoichiometric compounds हैं that obeys the law of constant composition. So let us see law of constant composition क्या होता है. Law of constant composition. Law of constant composition कहता है जो chemical compounds हैं that are made up of the elements जिनमें fixed ratio by mass present होता है. Chemical compounds are made up of elements that are present in a fixed ratio by mass. Fixed ratio by mass. So by this we can say जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं बिकॉज इट सेज द सेम थिंग. सो जो हमारा असर्शन होगा दैट विल बी करेक्ट. एंड रीजन सेज शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट हैं, these are observed in the stoichiometric compounds. So let us discuss about this. It says about the defect. So डिफेक्ट क्या होते हैं, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल का
उसमें अगर कुछ इम्परफेक्शन आ जाए एंड दैट मे बी ड्यू टू द लॉस ऑफ कैटायन या फिर लॉस ऑफ अनायन की वजह से, दैट इज टर्म्ड एज द डिफेक्ट। एंड एक होता है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एंड इन सच काइंड ऑफ डिफेक्ट, जो हमारे पास कैटायंस और अनायंस होते हैं उनका रेशियो सेम रहता है इम्परफेक्शंस के बाद भी। अगर कोई कैटायन और अनायन मिसिंग हो जाते हैं, स्टिल द रेशियो विल बी मेंटेन्ड। सो वी कैन राइट ratio between ratio between the cation and anions, the cations and anions remains same as represented by the molecular formula, as represented by the molecular formula। And such kind of defect जो है are shown by this stoichiometric compounds, because जो molecular formula है that will remain the same and the ratio is maintained। And in stoichiometric defect हम स्टडी करते हैं Schottky defect and the Frenkel defect। Schottky defect and Frenkel defect। Frenkel defect एंड जो हमारे पास Schottky defect है, इट इज ए टाइप ऑफ डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन मिस होते हैं फ्रॉम देयर लेटिस साइट। सो वी कैन राइट equal number of cation and cation and anions are missing from their missing from their lattice site and जो फ्रेंकल डिफेक्ट्स होते हैं इन दैट जो हमारे पास आयन होगा that will be missed from its lattice site, but वो एटम को लीव करके नहीं जाएगा। जो उसके बीच में इंटरस्टिशियल गैप होगा, जो हमारा डिसलोकेशन है आयन का, that will go into the interstitial site। Ion is missing from its lattice, ion is missing from its lattice site and occupy interstitial site, interstitial site। So let us see the structure। let us say हमारे पास ये एक लेटिस थी जो यूनिट सेल से मिलके बनी होती है। जब यूनिट सेल आर रिपीटेड ओवर एंड अगेन, एंड इनमें हमारे पास कुछ कैटायंस और अनायंस प्रेजेंट थे। लेट अस से these are the cations and anions present in this way। एंड जब इसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन मिसिंग होंगे, then it will be termed as the Schottky effect or the Schottky defect। Let us say
So here we can see यहाँ पे equal number of cation और anion मिस हो गए हैं. So such kind of defect is the Schottky defect. और जो यहाँ पे हमारे पास जो एक cation है वो interstitial site में चला गया है, which is the space between these letters, and it is the Frenkel defect. Frenkel defect. And we have already discussed जो stoichiometric defect होते हैं उनमें हम पढ़ते हैं Schottky defect and the Frenkel defect, which means जो number of ratio है for the formula mass that is maintained, and by this we can say जो Schottky और Frenkel defect है that are shown by the stoichiometric compounds, and this is the correct one. So by this we can say जो हमारा आंसर होगा that will be option first, because the reason है that is the correct explanation or the correct example for this stoichiometric compound. So जो हमारे पास first option है which says if both assertion A and reason R are true and the reason R is a correct explanation of the assertion A. So let us mark the option first as the correct answer of this question. And जो हमारे पास option second, third and fourth हैं, these are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.